Assalamu alaikum to all my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. Last time in Everyday Science we have discussed about fossil fuels. Fossil fuels include coal, natural gas and petroleum. Last time we covered the area of coal, and now today we are going to discussing about petroleum. First of all, we should know about that word petroleum. Petra is derived, it means rock, oleum means oil, rock oil. Million years ago, for example, अगर हम देखें डायनासोर्स जो पहले मौजूद थे, आज वो मौजूद नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मल्टीपल ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रिमेन्स अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो डिपॉजिट होती चली गई, और उनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से वो जो एनिमल हैं, डेड एनिमल्स, दे विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लैकिश viscous liquid, and that blackish viscous liquid which is derived from the rocks, that is called petroleum. तो पेट्रोलियम जब तक हम इसको जब जमीन से निकालते हैं तो ये बिल्कुल नाखालिस होता है, नाखालिस क्रूड ऑयल होता है, इनके हमारे ये उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक हम इसको रिफाइन ना कर लें। देन पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं, और पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए जो हम फैक्ट्री लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रिफाइनरी। तो पाकिस्तान में कुल 4 ऑयल रिफाइनरीज जो है वो काम कर रही हैं। तो वो क्या है, ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, पेट्रोलियम उसमें हम किस तरीके से उसको हम साफ करते हैं, वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर हो रहा होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम is a compound term. Petra and oleum. Petra means rock and oleum means oil, rock oil, chatanite. What is the petroleum? Petroleum actually it is the blackish viscous liquid, which is obtained or which is extracted from rocks, that is petroleum. Blackish viscous liquid which is extracted from rocks, that is called petroleum. First of all, we should know about its formation, how petroleum is formed. Million years process, or million years ago, dead animals which buried under the surface of earth. On these dead animals, due to temperature, pressure, and B stands for bacterial, D stands for decomposition. Bacterial decomposition, these dead animals, they convert into the blackish viscous liquid, and that blackish viscous liquid is formed, that is called petroleum, and it covers in a million years. It takes a million years. That is not a process of 1 month, 2 months, or 2 hours, 3 hours, 4 hours. That is million years process, and petroleum is formed. Now, the blackish viscous liquid which is extracted from the rocks, that is impure, and it is also known as crude oil. Blackish viscous liquid which is extracted from the rocks, that is impure, and impure oil, that is called crude oil. That impure oil, and that impure oil is called crude oil.
जब तक हम इसको रिफाइन ना कर लें तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जो है, जो हम फैक्ट्री लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रिफाइनरी। टू रिफाइन द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए। रिफाइनरीज, इट इज दैट इंडस्ट्री आर that is used to refine the crude oil, to refine crude oil, कि बाहर से जो हम मंगवाते हैं वो ये नाखालिस तेल है क्रूड ऑयल की। इन पाकिस्तान 4 oil refineries are working. 2 oil refineries are working in Karachi. 2 oil refineries are working in Karachi. One is Attock Oil Refinery. Attock Oil Refinery near Rawalpindi, and next Pak Arab Oil Refinery, Pak Arab Oil Refinery, which is located near Mahmood Court, near Multan. मुल्तान रीजन। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताउन से लगाई गई है, एंड दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू रिफाइन द ऑयल। इफ वी टॉक अबाउट रिफाइनरीज इन कराची, 2.13 मिलियन टन 2.13 मिलियन टन क्रूड ऑयल को एनुअली ये रिफाइन कर रही है। इसी तरीके से अगर हम अटक ऑयल रिफाइनरी की बात करें, ये एक ऑयल रिफाइनरी जो है 1.25 मिलियन टन जो है 1.25 मिलियन टन इसको मजीद वसी किया गया है। और याद रहे कि अटक ऑयल रिफाइनरी, ये इससे जो हमारे पास इनकम आती है, ये पूरे पाकिस्तान का जो बजट बनता है टोटली, उसका 16% जो है ये एक ऑयल रिफाइनरी पे करती है, दैट इज अटक ऑयल रिफाइनरी। एक वसी एरिया जो है इसका अपना मौजूद है अटक ऑयल रिफाइनरी का। अब हम देखते हैं कि ये जो रिफाइनरीज है, इनमें ऐसा कौन सा काम होता है रिफाइनरीज के अंदर जो कि क्रूड ऑयल को ये रिफाइन कर देता है। तो रिफाइनरी में जो प्रोसेस होता है उसको हम बोल रहे होते हैं डिस्टिलेशन, यानी कि पेट्रोलियम को साफ करना डिस्टिलेशन कहलाता है। जब हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से डिफरेंट रीजन को अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम की हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ petroleum. The word fraction mean components. Fraction mean components, fractions. Distillation mean separation. What is the fractional distillation? Separation of different components, separation of different components of petroleum at different boiling range, different boiling range पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम एट डिफरेंट बॉइलिंग रेंज, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन a long vertical tar is used
a long vertical tar is used where petroleum is subjected or petroleum is placed at a very high temperature, while approximately petroleum is heated at 2000 centigrade, and then the petroleum is subjected in a vertical tar, and that vertical tar has different fractions, has different components, it has different compartments and so on. It has different compartments, and in different compartments, first of all, the fraction which has very low boiling point, it will separate out. Then the fraction it has higher boiling point, next it will separate out, then and so on. That is the fractionating tower. In fractionating tower, we have different fractions which have different boiling range. The separation of different components of the petroleum at different boiling range, that is called fractional distillation. Different fractions are separated in a vertical tar at different boiling range. They will collect in different compartments. For example, if we see the different fractions of the petroleum, first of all, that is natural gas. Natural gas contain carbon 1 to 4, methane, ethane, propane and butane, and methane CH4, that is the basic component of natural gas, 85%, and its boiling range is very low, less than 20 centigrade. Then petroleum ether is separated, which contain carbon 5 to 6, and its boiling range is greater than 20 to 60. Next, now liquid contains 6 to 7 carbon, and its boiling range is 60 to 100. Gasoline oil, that is also known as Pakistani petrol, it contains 4 to 13 carbon, where the star stands for the most widely used gasoline is 6 carbon to 8 carbon. In 8 carbon, that is called octane, 6 carbon hexane, and its boiling range is 40 to 220. Kerosene oil, matti ka tel, it contains 8 to 14 carbon, and its boiling range is 175 to 325 centigrade. Now the gas oil contains 12 to 18 carbon, which contain boiling range is 275, and last one, that is the lubricating oil contain more than 18 carbon, and it is the viscous liquid which has very high boiling range. At the end जो है ये चला जाएगा. इसके अलावा बाकी हमारे पास asphalt और पैराफिन जिनके रेजिड्यू जो है वो बच जाते हैं. तो ये टेबल जो है that is very important for objective. You should know about different components like natural gas, petroleum ether, lagrine, gasoline oil or petrol, kerosene oil, gas oil, lubricating oil, the percentage of the carbon and the boiling range of different fraction, and that is the fractionating tar. तो पेट्रोलियम जो है इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो करने के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं which have different boiling range in fractionating tar which is used in the refinery. लास्ट इसमें अगर हम कंपोनेंट देखें
तो लास्ट जो है फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम देखें तो वो नेचुरल गैस बनता है। तो नेचुरल गैस के अबाउट आपको पता होना चाहिए, जस्ट डेफिनेशन आपने इसको राइट कर लेना है। नेचुरल गैस क्या है? एक्चुअली नेचुरल गैस that is mixture of low boiling hydrocarbons. You should know about hydrocarbon, the compounds which contain carbon and the hydrogen element only, they are called hydrocarbon. And the major component of the natural gas, that is methane. The formula of the methane is CH4. 85% methane is found in 85% methane that is found in natural gas. The major component of natural gas is the methane. Other ethane, propane and butane are also present in the natural gas. Natural gas, it has different uses. For example, natural gas that is used in household work, like cooking purpose के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये सुई गैस के नाम से पाकिस्तान में पुकारी जाती है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो पाकिस्तान में सुई के मुकाम पर निकाला गया है। इसके अलावा पावर जनरेशन में नेचुरल गैस का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। नेचुरल गैस को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की सूरत में भी हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नो अबाउट CNG and LPG gas. CNG and LPG. CNG stands for compressed natural gas. And LPG stands for liquefied petroleum gas. CNG, compressed natural gas, and LPG, that is liquefied petroleum gas. These are also components of the natural gases which are used in everyday life. थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया।